e-learning सर चालू झालं. चालू झाले पण हे स्क्रीनवर काही ऑपरेट होत नाही. इथे स्क्रीनवर आलं ना, दिस मीटिंग इज बिंग लाईव्ह स्ट्रीम्ड, हे जात नाही. होत नाही. 2 मिनिटं सुरू करतो. हा लाईव्ह स्ट्रीम बंद करा. झालं. ठीक है, चलो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व्ड. Good morning. We all are again meeting for a new session, a session about your first paper of Civil Services main examination, that is essay writing. Now, why this session is important towards the beginning of your course is once you are introduced to the elements, essential elements of essay writing, you get almost 1 year to prepare. But if that is not done, then most of the aspirants are fairly in dark about what is to be done while writing the essay, what kind of basic preparation is needed while writing the essay. And most of them, once if they are not given such guidance towards the beginning, they end up writing essay impulsively. You get what does it mean to write impulsively? जैसे मन में आता है वैसे लिखते जाते हैं. But essay writing is not like that. Whenever you choose a topic, even choosing a topic demands planning. Are you getting my point? And once you choose a topic for essay writing out of the 4 topics, then planning your essay of full length also demands planning. And it involves taking a stock of your awareness about the topic that you are going to write. No, then people are completely in dark. What are those elements which you should pay attention to while writing the essay? And whenever we evaluate such essays, we give them standard remark. First remark is you have not understood the demand of the topic. So जाना था इधर, essay लिख दिया उधर. So no matter how much valid arguments you are making, they are not relevant to the topic because you are going in wrong direction. So ये जो basic element है, ये आपको पहले highlight करना है. Now, why is that again? There are many things I would like to highlight towards the beginning. Essay preparation is not undertaken as intensively as other GS topics by aspirants, even by successful candidates. And this is due to various reasons. Okay, some of them are already well conversant with the good elements of writing. They have been writing from the beginning. So have you heard about Shah Faisal? He was 2012's topper from JNK. Okay, so he started preparing the exam before prelim 8 months. Imagine, prelim is in fairly May, June. So he started September, October around. And it was his first attempt without coaching, All India first rank. At that point of time, there were 2 options. Now, if you look at his background, why he could do it, then he used to write editorials for newspapers, English newspapers in JNK from his college days. Are you getting my point? So he had given some of the interviews to DD National Channel, and in those interviews, he said current affair was his bread and butter. Now, most of us start reading The Hindu only when we decide to go for civil services.
उसके पहले तो हम मराठी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, पढ़ते तो भी क्या पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मसाला, nothing serious about policy making, laws and schemes and their application. No, never. So considering the differing background, some of the toppers who come from such background, they tend to trivialize essay writing because according to them it was easy for them. Are you getting my point? Some of them, I remember one interview. She's now collector. She's I think secretary. Her name is Neela Mohanan. So she was a student of Pol Science and she was doing further education in journalism. So she said, interview of UPSC was much easier than what we face in our fellowship. Can you imagine? The kind of background some students have, they tend to trivialize essay writing. Some students tend to think essay writing is a byproduct of your GS preparation. Byproduct, you understand, right? That unintentionally you end up preparing for essay. You don't have to take focused efforts. आपको उसके लिए स्पेशली कुछ नहीं करना है. When you prepare for GS, you automatically prepare for essay. That kind of ideas are being propagated. Take essay writing as normal part of their writing. You should not be thinking like that, and that involves a new thinking. So what is that new thinking? I would like to tell you. So let me share PPT with you. So first thing I would like to highlight that whenever you are preparing for essay writing for main exam, you need a key difference, or you need to understand a key difference in approach. Okay, so if you look at essay paper in UPSC and its demand, which is given in the notification of civil services, they have mentioned few elements. What are those few elements? They are asking you to keep your writing close to the topic. Have you read notification of UPSC? Yes, आपने पढ़ा है? सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जो आता है, जिसमें सिलेबस होता है, देन एलिजिबिलिटी होती है, एज लिमिट, कट ऑफ डेट, देन अदर रिक्वायरमेंट्स. उसमें ऐसे राइटिंग के बारे में 2-3 लाइन्स उन्होंने मेंशन की. फर्स्ट लाइन इज यू हैव टू राइट बाय कीपिंग क्लोज टू द टॉपिक. That is first requirement. Second requirement, you have to arrange your ideas in an orderly fashion. When you say orderly fashion, means there is a sequence. You cannot write randomly. जो भी आप पहले लिखोगे तो वो पहले क्यों आ रहा है, उसका कुछ तो लॉजिक होना चाहिए. And third, credit will be given for exact and concise expression. आपको exactly लिखना है, concise लिखना है, verbose नहीं लिखना है. इतना ही उन्होंने कहा है. But again, this is not enough. Why I'll tell you. Like ethics, essay is not completely unfamiliar subject. Do you agree? Ethics कभी formally हमें पढ़ाया नहीं, right? But essay के बारे में ऐसा हुआ है क्या? No, not at all. We started writing essay since 4th standard, 3rd standard, 4th standard. I remember I had written my first essay in 2nd standard. 2-page essay, not more than that. This page and that page. वो भी छोटे notebook का, बड़ा भी नहीं. And that essay was on my mother. Standard topics: my school, my mother, my hobby, my country. And when I wrote that essay, my mother read it and she became, emotional. How could my child write like this? She did not know I had copied it from somewhere. This is how we start learning essay writing, right? Initially, we copy paste from books or from teachers. They tell us what is to be done. Sometimes they dictate the essay. We write it down and then we learn from it. Are you getting my point? And eventually, till our 10th standard or sometimes in 12th, if you opt for humanities and in graduation,
you tend to write essays, right? And we also get fairly good marks in this. I mean, above average, right? Very few people get below average, but most of us get above average marks. And that creates an impression, yeah, मैं तो इसमें अच्छा कर रहा हूँ. Are you getting my point? So it also happens in choosing optional paper. Whenever people tend to choose optional subject, वो क्या सोचते हैं कि मुझे स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता था. So अगर उस time if history I was fairly good in history, I would go for history. Many people go for geography also because of that impression कि उस वक्त मेरा geography सबसे बढ़िया था, मार्क्स अच्छे आ रहे थे, I will go for geography. But that impression is a sort of misleading, deceptive. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हम कर रहे थे उसकी डिमांड अलग थी, and what we are doing today उसकी डिमांड अलग. And if you carry the same impression forward, you are likely to commit a mistake in making choices, and you'll regret that, because once you choose a subject and once you spend time on it, and then you realize, okay, this was not right choice, then all that time is wasted. So before you make a choice, you should know what should be the criteria to make the choice. Similarly for essay writing, whenever you are preparing essay writing, you have to give up some of the old notions of essay writing, and then you have to adopt some of the new ways of essay writing. Then only it will happen, otherwise not. But sometimes people refuse to give up that, even though I teach them in the classroom do's and don'ts, what is to be done, what not to be done. Still they adhere to their old ways of writing. It happens subconsciously, क्योंकि वो हमने बहुत साल किया है. And to give up old habits is a very hard task, is it not? But that is essential. So इसको बोलते हैं learning unlearning. Okay, learning new things and unlearning old things. So वो हमें सीखना है, right? See, again, I would like to tell you, essay writing is not completely unfamiliar today, but because it is familiar, it may create obstacles. ऐसा होता है ना कि जिस बारे में हमें ज्ञान होता है, उसके साथ हम कुछ preconceived notions लेके आते हैं, कि इसको यही बोलते हैं, इसको यही कहते हैं, और उस assumption को, उस learning को छोड़ना ये सबसे बहुत challenging है. But ये आपको सीखना है, how to unlearn things and how to learn new things. जब तक आप ये नहीं करोगे, till that time your essay writing preparation won't be complete. ठीक है? तो इसमें आपको ये देखना है कि what you used to do in your schools and colleges was largely geared towards composition, was not essay writing. So I don't know how many of you had English literature as your subject in your college, but if you read essays in English literature, those are more sort of personal essays. Essay का मतलब मालूम है आपको? Essay का literal meaning है to make an attempt. Essay means to make an attempt. So whenever you write an essay, you make an attempt to put your thoughts on paper and let them flow effortlessly. You don't control them. लेकिन वैसा essay writing UPSC में expected है. UPSC demands you to arrange your ideas in an orderly fashion and in the according to the topic that is given to you. You can't write the way it comes to your mind. वैसा allowed नहीं है. But उसमें creativity allowed है, उसमें freedom है. ठीक है? What we call निबंध in Marathi means बंधन असणे. There is no restriction. So restriction नहीं है, ये सही है. That's true. Restriction है. Two different essays on the same topic can fetch the same marks. Okay, two different essays on the same topic can fetch same marks. But that does not mean कि restriction नहीं है तो कुछ भी लिखो. ऐसा नहीं है. What you write has to be meaningful and need not be meaningless. If it is meaningless, random, hodgepodge, then you won't get it. Are you getting my point? It has to have some structure. It has to have some arguments. It has to have some opinion. Composition writing पे opinion को इतना importance नहीं होता है. ज़्यादा importance किसको होता है? Information. Are you getting my point? कि जो सब्जेक्ट आपको दिया है, उसका information आप कितने अच्छे से present कर रहे हो, उसको ज़्यादा weightage है in composition writing. But in essay writing, putting information alone is not enough. That is necessary, but not enough. तो आपको ये देखना है कि और क्या चाहिए. Are you getting my point? So having information is not enough. You need more than information. Otherwise, giving mere information is as good as composition writing, and it doesn't give you better than others.
It gives you only average marks, and you are left behind in the race, because after all, it is competition. It is not graduate exam, right? Okay. Next question that you should confront is GS preparation enough to prepare for essay? Why? ये ऐसा होता है बहुत बार एस्पिरेंट्स के बारे में, they tend to read a lot as a part of their preparation, right? So आप देखो GS 1 में कौन सा सब्जेक्ट है? History, geography, environment, not environment, art and culture, Indian society. So history is in itself a big subject. You have to read multiple books. एक किताब आपको justice नहीं दे रहा है. Similarly for geography, right? From GC Leong to NCERT to and Fuller and all these people, you have to read. Similarly, Indian society, it is a dynamic subject. Even though you have static books, those are not enough because they are asking questions on dynamic. Similarly, art and culture. Art and culture के बारे में देखो, वो तो static demand करते ही है, लेकिन वो dynamic से current affairs से connect कर रहे हैं. So इस साल वो जो lion का controversy हुआ था, lion figure था, तो emblem पे कौन से animal होते हैं और उनका symbol का meaning क्या होता है, उसके बारे में art and culture. तो इतना सारा आपको GS 1 में पढ़ना है. If you go to GS 2, then you have entire political structure to deal with. Constitution है, governance है, governance में administration आता है पूरा, right? तो इतना सारा पढ़ना है. IR है उसमें, international relations है. थर्ड में जाते हो तो क्या क्या है? इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फार्मिंग के बारे में पढ़ना है आपको, है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है. इथिक्स में जाते हो तो मोरल फिलोसॉफी पढ़ना है, सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ना है, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट भी पढ़ना है. वंस यू रीड ऑल दिस एंड करंट अफेयर, यू टेंड टू गेट सैचुरेटेड. आपको ऐसा लगता है कि अब क्या बात है, गेटिंग माय पॉइंट. And above all of that, you tend to choose humanities, one of the humanities subject as your optional, है ना? So पॉल साइंस वाले हैं तो बोलते हैं पॉल पॉलिटी में और क्या पढ़ना है ना? पॉल साइंस पूरा तो हमने पढ़ा है अभी, थियरीज, थिंकर्स, देयर क्रिटिक, देन डायनेमिक एस्पेक्ट, इंडियन पॉलिटी, IR, इतना सब पढ़ा है. सोशियोलॉजी में जाते हो तो सोसाइटी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं. ज्योग्राफी में जाते हो तो ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का पूरा पढ़ चुके हैं. उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी आता है तो वो सोसाइटी के बारे में भी पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है. समझ में आ रहा है? सो वंस यू रीड ऑल दिस स्टफ, यू क्वेश्चन मार्क द एसे प्रिपरेशन, आप क्या पढ़ना है, अपनी जवाब क्या. बट लेट मी टेल यू, एसे राइटिंग इज नॉट mere a test of your awareness. It also tests your awareness, but it also tests more than awareness. It also tests your presentation skill. It also tests your persuasion skill. Through writing, how can you convince the reader to your viewpoint? How you can put your ideas on the paper well, concise, lucid, and how can you prove what you are saying? What kind of evidences you can give? Okay, ये सब देखा जाता है. And to make it happen, mere awareness is not enough. You need more skills. Let me give you one example. You have seen many teachers in your life, right? Some teachers were exceptionally brilliant. Subject के पूरा कमांड होता है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते. Have you seen such teachers? जब वो सिखाने लग जाते हैं ना, वो खुद से ही बातें करते हैं. स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कभी ध्यान नहीं देते. Have you seen such teachers? I have seen personally. I have done engineering, mechanical engineering. So engineering में मेरे कुछ teachers ऐसे थे, exceptionally brilliant. कुछ भी पेपर लेके जाओ उनके पास, प्रॉब्लम लेके जाओ, वो छट से सॉल्व कर देते. लेकिन क्लास में उनको क्या हो जाता था मालूम नहीं. समझ में आ रहा है आपको? कभी वो इधर देखते थे, कभी वो उधर देखते थे, कभी उधर देखते थे. स्टूडेंट आई कांटेक्ट कुछ भी नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं. कुछ लोग मेरे जो क्लासमेट्स थे, they tend to sleep on the first page. ऐसे ऐसे सो जाते थे. टीचर कुछ भी नहीं बोलते थे. क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था. समझ में आ रहा है? But some teachers, even though they had no complete knowledge in subject, they were sort of interactive. They used to make teaching playful activity. वो कभी वन में नहीं होता था. वन में मालूम है, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ और बाकी के सुन रहे, सो रहे. ऐसे नहीं. टू वे, कि मैं भी आपको कुछ पूछ रहा हूँ, you are also returning back in answer, wrong or right, then we are discussing the viewpoints. ऐसे वो होता था. तो ये जो ऐसे राइटिंग है ना,
वो सिर्फ नॉलेज डिमांड नहीं करता, वो बोल रहा है कि आपको प्रेजेंट करना आ रहा है कि नहीं, वो आपको सीख। समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस इज अगेन अ जॉब यू हैव टू परफॉर्म व्हेन यू विल बी अ ब्यूरो। कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। सो वो रिटर्न भी है, ओरल भी, ये भी आपको करना है, तो ये आपको अभी सीखना है। सो इट ऑल्सो टेस्ट योर प्रेजेंटेशन, बट नॉट ओनली प्रेजेंटेशन, उसमें कुछ तो डिमांड है, वो डिमांड आपको समझनी है। ठीक है, सो व्हाट आर द की डिमांड्स इसेंशियल ऑफ एसे राइटिंग? तो इसमें 4 चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो है इंफॉर्मेशन, इसके बिना आप एसे नहीं लिख सकते। इंफॉर्मेशन गिव्स अ फ्लैश टू योर एसे, फ्लैश बॉडी, कि जिसके बिना योर एसे माइट लुक लाइक अ स्केलेटन, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लेकिन उसका जो डेकोरेशन है, एस्पेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो इंफॉर्मेशन है। उसके बिना आप ऐसे नहीं लिख सकते। सो योर स्टार्ट ऑफ ऐसे प्रिपरेशन इज फ्रॉम इंफॉर्मेशन, टू गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, वहां से आपको शुरुआत करना है। जो भी टॉपिक रिपीटेडली आते हैं आपके इस राइटिंग में, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो एंड डोंट मेक इट पार्ट ऑफ करंट अफेयर। सो वी विल डिस्कस दैट एस्पेक्ट टुवर्ड्स द एंड। ओके, वो हम टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है फॉर्मेट। सो जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसको सिर्फ ऐसे देना नहीं, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, उसका एक फॉर्मेटिंग करना है, उसका स्ट्रक्चर करना है। ओके, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू द रीडर कि आप क्यों लिख रहे हो। ये फॉर्मेट क्या बताता है रीडर को कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग। समझ में आ रहा है? सो इंफॉर्मेशन गिव्स द रीडर व्हाट इज बीइंग सेड, format tells the reader why it is being said. So format is all about what? Why, purpose, highlighting the purpose of your writing. Are you getting my point? And without a visible structure, a reader cannot make sense कि क्या चल रहा है। कुछ तो चल रहा है उसे मालूम होता है, लेकिन क्यों चल रहा है उसे मालूम नहीं होता। So format fulfills that purpose. It explains the purpose of the writing. Third है language. Language is very important. It is a tool, vehicle, not only to write but to understand what you are reading. अगर आपका कमांड लैंग्वेज के ऊपर फेयर इनफ नहीं है, then your reading tends to be obfuscated, means not clear, ambiguous. आपको जो अंडरस्टैंडिंग उससे हो रहा है वो कभी क्लियर नहीं होता है, कभी प्रिसाइज नहीं होता है. That itself is a distorted understanding. वो नहीं होना चाहिए. Is that clear? So language के ऊपर minimum command आपका आना चाहिए. Minimum means at least you should be able to read and understand correctly. Writing comes later, speaking comes later, but minimum इतना तो आना चाहिए. Then it gives you right content. And many times it happens, what people tend to read, they don't understand correctly. उनका understanding distorted होता है. But as far as essay writing, it demands more than simple sentences. It also demands crystal clarity of your argument. कि आप जो भी बोल रहे हो वो रीडर के पास एग्जैक्टली पहुंचना चाहिए. उसका ओपन टू इंटरप्रिटेशन एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए. मींस आप जो बोल रहे हो उसका अगर अर्थ या मीनिंग मैं खुद के मन से लगा रहा हूं, then that is not a good writing. Rather you should guide the understanding of the reader. आपको उसको बताना कि इसका मतलब यही है, दूसरा कोई नहीं. That kind of writing should be there. So it involves expressing your thoughts and it involves presenting your thoughts in such a manner that reader will correctly understand what you want to say. समझ में आ रहा है? And finally, logic. जो भी आप दे रहे हो वो टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हो. समझ में आ रहा है? लेकिन वो पार्ट्स में क्यों दिया है, इसका लॉजिक कुछ तो होना चाहिए. Why you have divided in your writing into say 10 paragraphs, 15 paragraphs, 20 paragraphs. और वो हर एक पैराग्राफ का क्या फंक्शन है ये भी आपको बताना. इसको बोलते हैं एनालिसिस. एनालिसिस का लिटरल मीनिंग क्या है मालूम है? टू ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड स्टडी. एनालिसिस. सो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाट यू आर प्रेजेंट. क्यों ये पार्ट्स बनाए हैं, ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये लॉजिक आपको देना है. सो उसके लिए फ्रेमवर्क्स लगते हैं. ओके, वो डिफरेंट फ्रेमवर्क हम बाद में पढ़ेंगे.
लेकिन वो फ्रेमवर्क अगर आपके पास है तो वो जो पार्ट्स किए हैं उसका लॉजिक रीडर को क्लियर हो जाता है कि इसने ऐसा क्यों लिखा। समझ में आ रहा है? सो ये 4 चीजें आपके इसी में चाहिए। इन आवर स्कूल डेज वी टेंड टू ओवर एम्फसाइज इंफॉर्मेशन। हमने स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत आपने ध्यान दिया होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कंप्लीटली इग्नोर्ड लैंग्वेज एस्पेक्ट इन योर कॉलेज डेज, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, एज फार एज how many of you have studied logical fallacies while writing essays in your school days? आप में से कितने लोगों ने लॉजिकल फैलेसीज के बारे में पढ़ा है कि जो भी आर्गुमेंट में बोल रहा हूं वो सच में लॉजिकल है कि नहीं? ये कितने लोगों ने चेक किया है? Not many of you. Even you did not know that whether you are making arguments or giving information. ये भी डिफरेंस बहुत बार लोगों को समझ नहीं आता है। What is the difference between information and argument? So सिर्फ information दे रहे हो, that it becomes composition writing. It is not essay writing, and that gives you below average marks. So below average का मतलब out of 125 for one essay, your average marks are 40, 45. समझ में आ रहा है? तो उसके नीचे ही लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं। Better essays tend to get 60 plus marks. 60 मिनिमम उसके ऊपर मिल जाता है अच्छे essays को। जो बिलो एवरेज है वो 40-45 के नीचे ही जाते हैं। तो अगर आपको पहले टॉप 200 में आना है, यू नीड टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 60 प्लस, और उसके लिए ये सब एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? सो वी विल डिस्कस ऑल दीस एलिमेंट्स thoroughly. All right. Okay, some preliminary information about essay writing. One is this paper is of 3 hours. Right, and maximum marks given are 250. Right, so it is as good as 1 GS paper. Now, once you look at marks and time and the amount of time given to preparation, the trade-off is much larger. क्यों? GS के लिए जितना आप वक्त देते हो उतना आप ऐसे के लिए नहीं देते। Do you agree? Yes, it is normally seen among the aspirants that they tend to give more weightage to GS papers compared to AC paper. But if you look at returns on the efforts, AC gives you more returns on the efforts than GS. Are you getting my point? AC पे जितना आप एफर्ट लेते हो उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलते हैं, मार्क्स। GS पे जितना एफर्ट्स लेते हो उससे कंपैरिजन में मार्क्स आपको कम मिलते हैं। So what does this tell you? Spend at least equal efforts on essay writing. जितना आप GS पे स्पेंड कर रहे हो उतना ही आप AC पे स्पेंड करो, यू विल गेट मच बेटर मार्क्स। और GS में अगर थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, AC स्कोर विल टेक केयर ऑफ दैट वेरिएशन। लेकिन GS में आप कितना भी एफर्ट लगाओ, एक लिमिट के आगे नहीं जा सकते। एटलीस्ट GS 1 to 3. Are you getting my point? So it is your duty to spend equal time on AC writing because it gives you better marks. Are you getting my point? So make it a point in your mind that now onwards you are going to give at least equal weightage to essay writing compared to GS, not less, because it is going to be a game changer for you in your final result. And let me tell you, it has changed the result of many people. Okay. Second is, before 2014, UPSC used to give you 6 topics, and out of that you had to choose only one. And the word limit for one topic was 2000 to 2400. एक ऐसे लिखना था 3 घंटे में। 3 घंटे में एक ऐसे लिखना है, उसका वर्ड लिमिट था 2000 to 2400. Now imagine per page you are fairly writing 100 words. How many pages you have to write minimum? 20. Do you agree? By the time you cross 10th page or 11th page, you forget what you had written on the first and second page. समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना राइटिंग लाइफ में कभी किया ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना किया होगा आपने? 500 words, 600 words. उसका 4 टाइम आपको करना है, 3 टाइम करना है। Becomes more challenging, and it becomes also challenging for UPSC to evaluate your essay. क्योंकि 2000 words में सभी तो क्वालिटेटिव नहीं लिखोगे ना, कुछ तो बकवास चीजें भी रहेगी। How will they evaluate this? और एक चीज होती थी
पहले वो दे यूज्ड टू गिव मिक्सचर ऑफ फिलोसॉफिकल एंड जीएस बेस्ड टॉपिक, क्योंकि एक ही सेक्शन था। तो people used to choose only GS based topic because they had read something about GS. Philosophy के बारे में unless you have read something, taken interest, you can't write. मन से कुछ नहीं लिख सकते philosophical. कुछ तो इंटरेस्ट चाहिए, कुछ तो पढ़ा हुआ चाहिए, लेकिन कंपलसरी पढ़ना ऐसा नहीं है ना सिलेबस में। फिलोसॉफी के बारे में पढ़ो, ऐसा कुछ है कि सिलेबस में नहीं है। तो वो लोग उस वक्त क्या करते थे, जीएस बेसिक टॉपिक लेते। बट जीएस में क्या होता है मालूम है, व्हेनेवर यू राइट इन जीएस टॉपिक, only your knowledge and awareness is, being evaluated, और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपकी जो वैल्यूज है, आपका कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, उसका रिफ्लेक्शन आपके इसी में नहीं पड़ता है। वो कब पड़ता है, when you write philosophical based topic, because those topics are about abstract things in life. Abstract things means loyalty, love, joy, happiness, character. इनको आप देख सकते हो क्या? नहीं, लेकिन ये हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। And through these essay, it shows your understanding about life and its non-material dimensions. Are you getting my point? लेकिन लोग ये टॉपिक चूज ही नहीं करते थे। So whatever they used to write in GS, that was only evaluation of knowledge, awareness, understanding, depth of understanding. That's all. Personality क्या है ये मालूम ही नहीं पड़ता। So उन्होंने क्या किया, after 2014 और 2014 से ही एक सेक्शन अवॉइड करके दो सेक्शन बना। एक सेक्शन कंपलसरी जीएस बेस्ड टॉपिक होता है, एक सेक्शन कंपलसरी फिलोसॉफिकल बेस्ड टॉपिक होता है। तो एक फिलोसॉफिकल आपको लिखना ही है। एंड इफ यू लुक एट लास्ट 2 years पेपर्स, इन बोथ दी सेक्शंस दे आर गिविंग यू फिलोसॉफिकल बेस्ड टॉपिक्स, सो दे हैव मेड इट अगेन मोर चैलेंजिंग फॉर यू। ठीक है, जीएस बेस्ड पूरा कम कर दिया है एंड फिलोसॉफिकल बढ़ा दिया है। Are you getting my point? So you need to now pay extra attention to philosophical reading, ideas in philosophy, perspectives in philosophy. तो उसके लिए हम 2 extra लेक्चर लेने वाले हैं। One will be about metaphorical philosophical topics and another will be about philosophical frameworks. Each section has 4 essay topics. You have to choose one from each section compulsory, and each essay needs to be written in 1000 to 1200 words. ठीक है, so 1000 वर्ड में एक essay लिखना है तो 3 घंटे में कितने वर्ड्स लिखने हैं? उतने ही जो पहले आप लिखते थे 2000, बट एक टॉपिक के लिए। अभी 2 टॉपिक। Are you getting my point? Then आपको ये भी ध्यान में रखना है कि you need to be aware of the fair length of your writing, कि 1000 वर्ड या 1200 वर्ड लिखने के लिए आपको कितने पेजेस लगते हैं। And from the day one you should start writing 1 page a day. ये मैंने आपको इस के सेशन में बोला है। तब जाके कहीं आपका स्टैमिना डेवलप होगा, वरना नहीं होगा। Are you getting my point? और एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, which is important. Sometimes in GS based topic they tend to give you such a topic where the name of India is not explicitly mentioned. इंडिया के बारे में है ऐसा कहा नहीं जाता है टॉपिक। कुछ टॉपिक में होता है लेकिन कुछ टॉपिक में नहीं होता है। सो जैसे एक टॉपिक है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये टॉपिक है। अब इसमें इंडिया का नाम दिया है नहीं। सो हियर यू कैन राइट अबाउट द वर्ल्ड बट आल्सो राइट अबाउट इंडिया। और टॉपिक ले लो, डेस्टिनी ऑफ नेशन इज बिल्ट इन इट्स क्लासरूम। अब ये नेशन इंडिया ही है ऐसा थोड़ी है, ये कोई कौन सा भी नेशन हो सकता है। बट यू हैव टू आल्सो मेक कमेंट और ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये आपको समझ में आ रहा है? सो नेवर एवर मिस्टेक दैट दिस टॉपिक इज टू जनरल। नो, समटाइम्स इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड समटाइम्स इट इज आल्सो अबाउट इंडिया। सो जिस टॉपिक में इंडिया के बारे में, वहां बाहर की चीजें मत है, लेकिन जिस टॉपिक में इंडिया का नाम नहीं लिया है उसके बारे में बाहर से तो लिखो, लेकिन इंडिया का भी लिखो। ये आपको करना ही है। Always keep in mind. So this is particularly true about GS based topics. Is that clear? So ये बेसिक चीजें हैं essay राइटिंग के बारे में। ओके, अब हम आगे जाएंगे, डिजायरेबल एलिमेंट्स देखेंगे।
So जो भी मैंने आपको बताया था वो 2-3 चीजें that you have to keep close to the topic, you have to arrange your ideas in logical and orderly fashion. Marks will be given for concise and exact expression. Okay, इनको हमने 4 elements में divide किया. You have to pay attention to all these 4 parts. So पहला part देखो, one is scope and extent of the topic. Scope and extent of the topic. इसको हम बोलते हैं ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द टॉपिक। जैसे आपने टॉपिक चूज किया है उसके लिमिट्स आपको ड्रॉ करने हैं, किसके अंदर ही मेरा सब लिखा हुआ रहेगा। माय ऑल राइटिंग विल बी कन्फाइंड टू दिस बाउंड्री एंड विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री। समझ में आ रहा है? सेकंड है थॉट प्रोसेस। इट मीन्स जो भी आप लिखने वाले हो, जो भी आप कहने वाले हो, whatever you are going to say or argue, what kind of thinking you have used to make that argument. You have to reveal that thinking. You have to make it clear to the examiner. इससे क्या हो जाता है? The task of examiner becomes easy, simple. Decoding what you have written doesn't become puzzle solving. समझ में आ रहा है? It becomes interesting treasure hunt. You know, मैप तो है, कहाँ जाना ये मालूम है और मुझे वो मिल भी रहा है। That becomes interesting. So आप थॉट प्रोसेस में क्या बता रहे हो कि जो भी आप आर्ग्यू करने वाले हो वो कैसे करने वाले हो, वो आप रिवील कर रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ये भी आना चाहिए। So इसमें क्या होता है, इन दिस थॉट प्रोसेस में जो आपने बताया था एग्जाम में, that this is how I am going to explain the topic. This third takes care of that. This third element, clarity of thought and expression, helps you to explain the topic very well. So this involves use of language ability or certain language skills. Okay, so sometimes use of specific words, phrases, idioms. Are you getting my point? Or expressions, sayings, proverbs, quotes. All these things are involved in this clarity of thought and expression. And finally, originality of the student. At least in one place, you need to say something which cannot be said by anybody else. आपको ऐसी चीज कहनी है somewhere in the essay, which is your own, which is unique, which is original, that makes your essay stand apart from the crowd. लेकिन बहुत बार लोग इधर फंसते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि ये कैसे करना है, और उसकी वजह भी होती है, that I'll tell you. Okay, so let's start with first element, scope and extent of the topic. All right. So let me tell you how essay writing happens in hall, exam hall. Fairly, you have to write 2 essays. So out of 180 minutes, 90 minutes for each essay, right? Mathematical calculation. In 90 minutes for each essay, you need to spend at least 15 to 20 minutes on planning this. आपको impulsively नहीं लिखना है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो ऐसा होता है impulsively when you start writing, it may not start in right direction. Okay, इधर जाना है उधर जाओगे, तो बीच में अगर मालूम पड़ा कि ये नहीं करना था, it will be disaster. Even if you go in right direction, not all ideas, worthy ideas, will come to your mind whenever you are writing. समझ में आ रहा है? जब भी आप जैसे impulsively लिखोगे, and suppose आपने सही डायरेक्शन पकड़ा है, you are going in right direction, that does not mean all good things or good ideas will come to your mind. Sometimes they may come later. Then you will realize कि इसको मैंने पहले लिखना था, ये मैं बाद में लिख रहा हूँ.
and that will make your essay writing random process. So ये जो पहले के 15 to 20 minutes है, ये आपको brainstorming के लिए यूज करना है. Brainstorming means to write down or jot down everything that comes to your mind about the topic in point format. That is your first. Here you are drawing the boundary. जो भी मन में आ रहा है वो लिख रहे हो, but while doing this you are also thinking कि ये टॉपिक के लिए सही है कि नहीं. अब ये कैसे करना है? Write down. You have to divide your points into key points and peripheral points. You have to divide whatever comes to your mind into key points and peripheral points. अब key point का मतलब क्या है? Key point means that point which is directly and closely connected to the topic. Is that clear? Key point का मतलब क्या है? Something which is directly and closely connected to the topic. While peripheral point is something which is connected to the topic but indirectly and not close, distant. Topic से संबंध तो है, but वो direct नहीं, वो किसी के through है, indirect है, और वो distant भी है, उसका direct connection नहीं बता सकते. समझ में आ रहा है? So for example, poverty and education इसका direct connection हो सकता है, but poverty and crime इसका direct connection नहीं हो सकता है, ये indirect हो सकता है. ये आपको समझ लेना है. Are you getting my point? So whenever you are generating ideas, you have to classify the ideas into key points and peripheral points. Are you getting my point? So let's do that. I'll give you one topic and I'll give you say 5 minutes to generate the ideas and divide those ideas into these two categories. Okay, so shall we do it? Okay, take simple topic. Energy crisis in India. Energy crisis in India. That's a simple topic. Now divide your page into two columns. Okay, on the left hand side, put key points. On the right hand side, put peripheral points. And whatever comes to your mind, you have to write in point format, not in sentence format. Okay, start. I'll give you 5 minutes. Online people, have you got the topic? Yes. Those who are watching on YouTube, I'm looking at your responses in live chat. You can also respond if you're at all writing about the topic. I will respond to you. Are you getting my point, online people?
Even those who are available on Zoom, they can also give me response. You can also attend Zoom meeting. The link is provided on YouTube video in the description. People on YouTube, are you able to follow my arguments? What I'm saying? Here, those who are available on Zoom meeting, have you got the topic? That energy crisis in India, you have to generate ideas and divide them into key points and peripheral points. So if you have understood the topic, please let me know, either by typing in chat box or raising your hand. Those who are live on YouTube, you can join us on Zoom. The session is going on live. Peripheral means something which is connected to the topic but not directly, which is indirectly or distantly, which has no direct connection to the topic, or which is not directly explaining the purpose of the topic. Sanket, I have got your points. Thank you. Even those who are live on YouTube, they can put them in chat box, live chat. Okay, have you written few points?
Okay, can you tell me points that you have come up with? Yes. So dependence of India on food and other places like So we are dependent on imports. economic loss. Economic Which loss? means production decreases. Let us speak. Due to energy crisis, there will be less in the production, which will produce in the industries and Correct. So you are talking about effects, but is it key point or peripheral point? key points. No. Is it The topic is about energy crisis in India. The topic is not about effects of energy crisis. So whatever effects are going to be there, those will be in peripheral points. So you have to think whether we should give priority to peripheral points or key points. They are largely dependent on fossil fuels. Ah. People need to use renewable energies. So here, need to use renewable energy. Is it key point or peripheral point? No, it is peripheral because you are talking about solution. But the topic is not about solution, how to solve energy crisis. The topic is explain energy crisis. India is nuclear power still have insufficient nuclear power houses. Nuclear power plants, Insufficient. insufficient number of nuclear power plants. Okay, all right. not and also there is so like that much coal mines in India. Technological restrictions, what do you mean by that? So does that mean we are dependent for technology on the others? All right, so that could be there. Yes, anything else? Which are able to have That is just now, but we are talking about enduring energy crisis. We are not talking about energy crisis now in India. insufficient natural resources. That is what fossil fuels nahi hote. We are dependent on import. Anything else? Online people, YouTube live people. What are your points? Economy is not strong. What does that mean? Economy is not strong. So how is it contributing to energy crisis? Schemes that introduced by our governments. So, However, so what is the scheme? Connection of scheme to energy crisis. Okay. So what is its connection to energy crisis? Okay. So that is solution that you are talking about. Solution is peripheral point. First talk about key points. Anybody else? जो लिखा है वो बताओ. Peripheral, no, why not key? Already have said. Anything new to add? the other amount of using vehicles on depend on oil, like petrol and diesel, instead of electric vehicles. So electric vehicle will also need energy. Only different sort of energy. So how is that the cause of energy crisis? But electrical energy can be created using like fossil fuels, petrol, diesel that we are using, that is limited. Correct. So here you are giving solution. You are not pointing out problem. Are you getting my point? There's so many things to say about energy crisis in India. Huh? Means what? Go ahead. Yes. Online people, only Sanket has given reply. What about others? Akash, Bhagyashri, Mehak.
Rishikesh, Sayyid, Shreyas. What about you guys? Do you want to speak? You can raise hand, I will unmute you. Or you can unmute yourself and speak. Yes, anyone else? Do you want to add into these key points? Yes. Now imagine a foreigner is coming to visit your country and you want to explain the energy crisis in India. Do you think this is enough explanation? Absolutely not. There are other factors as well which you need to take into account. For example, political factors. But what about political factors? When the elections are around, electricity bills are waived off. ऐसा होता है ना, जो फार्मर्स के बिल होते हैं वो एक तो माफ किए जाते हैं या फिर कम किए जाते हैं. Now, is that a good incentive for rational use of energy? So in the area where there is a plenty of water and supply, people don't use electricity rationally. Are you getting my point? वो क्या करते हैं? Towards the evening they switch on the motor, towards the morning they switch it off. पानी कहाँ जाता है, कैसे जाता है, they don't worry about it. Because they know it. Once the elections are around, their bill is going to be waived off. Don't matter. Second, most of the power discoms are defunct. Defunct in a sense, they are without cash, without assets. Why? Because there is corruption. Discoms, you know, MSCB, MSCBCL. उसमें करप्शन है, उसकी वजह से वो आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, सप्लाई नहीं दे पा रहे. समझ में आ रहा है आपको? There is also theft of electricity. How many of you have written about it? That people steal the electricity, hooks डाल के, in rural areas, आंकड़ा डालना पड़ता है, right? You have seen that. So there is no technology for real-time detection of theft. आपको ऑफिस में बैठ के मालूम होना चाहिए कि कहाँ कितना थेफ्ट हो रहा है. वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं. So what we need is field visits by officials, what we call bharari pathak. But again, villagers and officers are hand in glove with each other. So officers inform them already क्या जाने वाला है, वो निकालो. So it is systemic corruption. People are also part of corruption. So theft हो रहा है. Then there are attitudinal factors. Attitudinal factor क्या है? That people who are wealthy enough to pay bills, they are not serious about rational use of it. So मानो मेरा salary 2 लाख है. Even if I have bill of 10,000, I will pay it. मैं कितना भी यूज करूँ? रूम में लाइट्स नहीं चाहिए फिर भी ऑन रखूंगा, फैन नहीं चाहिए ऑन रखूंगा, एसी नहीं चाहिए ऑन रखूंगा, टीवी दिन भर चलता रहेगा. But have we produced electricity for this purpose to earn bill, earn money in terms of bill? We have produced electricity for productive purposes as well. वो वहाँ use नहीं हो रही, so that is known as diversion of electricity, and that also contributes to crisis of electricity. Then there is huge demand for electricity. है ना? क्यों? Because population is huge, and especially young population. Young population is productive population. In order to remain productive, they need energy. So even if you go to farming, today it is being mechanized, है ना? In terms of tractors, in terms of other equipments, even grass cutters, they are operated by electricity or diesel engines. So for that also you need electricity, but there is no supply. और वो जो सप्लाई है उसमें रीजनल इम्बैलेंस है. ये आपने बताया क्या? That cities get more share of electricity compared to villages. सिटी में आप देखो हार्डली 1 hour पावर डिस्टर्ब होता है, हार्डली 1 hour, 1 घंटा भी नहीं होता है, कंसिस्टेंट सप्लाई रहता है उनका. ओके, वंस इन अ व्हाइल, वंस इन ईयर ऐसा होता है.
विलेज में हमेशा होता है। समझ में आ रहा है? फार्मर की जो एक्टिविटी है दोज आर गवर्न बाय लोड शेडिंग शेड्यूल, है ना? 10 घंटा लोड शेडिंग है, 12 घंटा लोड शेडिंग है, सो दैट डिस्टर्ब द इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है आपको? सो ये रीजनल इम्बैलेंस भी आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? देन कल्चरल फैक्टर्स भी है हमारे यहाँ। कल्चरल फैक्टर्स क्या है? टुवर्ड्स द इवनिंग वी स्विच ऑन ऑल द लाइट्स, राइट? बिकॉज गॉडेस लक्ष्मी arrives. I can understand in a small home if you switch on the light it is necessary, but if you have 10-room bungalows, why you need to switch on the light even in toilets? Because the goddess Lakshmi is arriving. Are you getting my point? ये cultural factor भी है. Then there are environmental factor as well. Climate change is happening, है ना? So इसकी वजह से sea level rise हो रहा है. So that is creating a threat to nuclear power plants that we are erecting on sea coast. So जो यहाँ हुआ था जापान में फुकुशिमा, वैसे डिजास्टर हो सकता है, न्यूक्लियर डिजास्टर। समझ में आ रहा है आपको? या फिर many times storms do happen, या फिर हम जिसको बोलते हैं सडन रेन, जिसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, वो हो जाता है। तो उसकी वजह से दो चीजें होती है, दे फ्लड द माइंस, है ना? माइन फ्लड हो जाती है पानी से, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, पावर सप्लाई डिस्टर्बेड। सो क्लाइमेट चेंज पे आपको देखना है। देन देयर आर लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट क्या है इसमें? कि अभी जो एजिटेशन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स बिल के अगेंस्ट, आपने सुना है? The center wants to reform the electricity law, but people are opposing it. So reforms कब होंगे? जब law reform होगा तभी होंगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे because there is absence of dialogue between stakeholders and government. जो farm bills के बारे में हुआ था, had they consulted the relevant leaders of farmers, there would have been less opposition. Now what they had to do, they had to cancel all the bills, and that is waste of time. 700 farmers lost their life. Economic activity was disrupted. Law and order situation was created. Are you getting my point? So ये ground अगर आपको cover करना है with the relevant points, what you need is write down pestle analysis. If you want to cover the relevant ground, what you need to do is pestle analysis. अभी pestle का हर एक लेटर का मीनिंग लिखो। P means political. आपको political dimension चेक करना है while generating ideas. Okay. Then you have to look at economic dimensions. So जो आपने बोला था research नहीं है, तो इसका economic dimension क्या है? We are not spending enough on R&D or research institutions. है ना? बजट में वो प्रोविजन नहीं है। देन सोशल डायमेंशन भी आपको देखना है। एस मींस सोशल। सोशल डायमेंशन में क्या आता है? बर्जनिंग पॉपुलेशन है, उसमें यूथ ज्यादा है, उनको एनर्जी चाहिए, बट रीजनल इम्बैलेंस है ना? गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, लेकिन वो सब घर में नहीं पहुंची है। सो ये जो क्लेम होता है गवर्नमेंट का, वी हैव इलेक्ट्रिफाइड ऑल द विलेजेस, दैट इज ट्रू, but have we electrified all the homes in the villages? No. समझ में आ रहा है आपको? So ये social dimension भी आपको देखना है। Then T means technological dimension. So इसमें आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, that there is no technology to detect real-time theft and its location. Then there are no advanced power plants or machinery in advanced power plants. उसकी वजह से क्या हो जाता है? Production losses are there, even distribution losses are there. Distribution means when you carry electricity from one point to other point, some electricity is lost in between due to resistance of the conductor. तो वो एडवांस कंडक्टर चाहिए जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी आपके पास है ही नहीं, तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो जाते हैं, प्रोडक्शन लॉसेस हो जाते हैं।
समझ में आ रहा है? The next E है environmental dimension, जिसके बारे में we have talked about climate change and its impact on energy production. L means legal dimension. Here you can talk about the role of law and policy in causing crisis of energy in India. है ना? So बहुत सारी policies पुरानी हैं, they are not ready to meet the demand of current time. उसको reforms चाहिए, है ना? और एक dimension add करो C. C means cultural dimension. Cultural dimension. And E, last में E add करो, ethical dimension. ये भी कभी-कभी लगता है आपको. So when you take into account all these dimensions, you are better able to generate the ideas for your essays. So this is your first step. When you are deciding scope and extent of the topic, whatever ideas you generate, you should be able to classify those ideas into two categories: key points and peripheral points. And for that, pestle analysis is used. Okay. The next step is you have to set priorities by keeping in mind word limit. So prioritizing by adhering to word limit. अब ये क्यों चाहिए? Sometimes it happens you get the topic from the optional you have studied. ऐसा हो जाता है. So polity के बारे में topic आया and you have studied pol science. So you are likely to generate more ideas than necessary. So जैसे मानो मैंने 20 ideas generate किए, and if I give weightage to each idea, so to cover 1000 word limit ground, I would have to write 50 words for each idea, but that may not help me to show my depth of understanding. Then you have to prioritize. You cannot choose all the ideas, even though you have them. You have to select few and treat them well, explain them well. So out of 20, I will choose only 10. So roughly, I will have 100 words for each item. And then I can show my depth of understanding. So ये priority भी आपको set करना है. Even though you may generate more ideas, you have to keep in mind, you don't have to write about each and every idea that you have generated. Rather, select few and explain them well. Is that clear? Next is what you know versus what needs to be written. ये भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है. Bhagyashree, roughly they give you 10 to 11 pages in answer sheet, and you have to cover all those depending on your size of letters that you are writing. Some people can write 100 words in a page, some people can write 150 words. So अगर कोई 150 words एक पेज में लिख रहा है तो उसको 6-7 पेज में ही ऐसे हो जाएगा. लेकिन अगर किसी का 100 पेज पे 100 words per page आ रहा है तो उसको 10 पेजेस तो कम से कम लिखनी है. So depending on your size of letter, you should decide how many pages. But वो आपको 10, 11 या 12 pages दे देते हैं, and that much is available. You can't join the supplement. ठीक है. अब ये भी important है. Sometimes whenever writing essay, we tend to focus on either of the dimension too much. एक केस में लोग ऐसा करते हैं जो खुद को मालूम है वही लिखते हैं without caring about what they are expecting. वो भी गलत है. और दूसरे केस में लोग ऐसा करते हैं कि उनको जो चाहिए वही लिखते हैं, खुद को क्या मालूम है उसको साइड में. ये भी गलत है. Rather, you should be able to reconcile these. Reconcile means first you should generate what you know. क्योंकि आपको जो मालूम है वही आप लिखो ultimately. लेकिन उसमें से सब relevant नहीं होगा. I'm getting my point. Whatever ideas you generate, those are known to you. That's why you are generating. But not all of them are relevant. Not all of them are congruent to your topic. So what you need to do, eliminate those which are not relevant. So जैसे इसमें solution is not relevant. So you have to mention that solution towards the end, if at all space permits, because that is not the key demand of the topic. What is key demand? Explain the energy crisis in India and its root causes. That's all.
तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नो आपको पहले लिखना है पॉइंट फॉर्मेट में, और उसमें क्या चाहिए उतना ही रखना है, बाकी सब एलिमिनेट कर। दैट मेक्स योर राइटिंग टू द पॉइंट, फोकस्ड ऑन द टॉपिक। अगर टॉपिक के लिए नहीं चाहिए ऐसी भी चीजें लिखोगे, इट विल डिस्ट्रैक्ट द एग्जामिनर और आपको मार्क्स नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको? And in order to know this, what you need is practice. Okay, so end में क्या करना है आपको, practice करना है। So let me tell you one thing about it. The Hindu में बहुत बार ऐसे आर्टिकल आते हैं which are as good as your UPSC से, right? Okay, so this paper is important for you. कुछ आर्टिकल मैंने खुद शेयर किए हैं, वो जो चैनल है, मैंने आपको चैनल का नाम दिया है कि टेलीग्राम का, प्लीज लिख लो, यूनिक एथिक्स डिस्कशन ग्रुप। यूनिक ethics discussion group. Unique ethics discussion group. On this channel, we share current affairs related to ethics and some articles related to AC. So some opinion articles written in the Hindu are as good as your AC. So whenever you are reading articles in the Hindu, don't just pay attention to content part. Also pay attention to design part. कि उन्होंने उस आर्टिकल का डिजाइन कैसे किया, कैसे बाउंड्रीज ड्रॉ की है, how they have selected key points and how they have avoided the peripheral. ये आपको एनालाइज करना है, and you have to do it by reading again and again. So सिर्फ कंटेंट पढ़ना ये आपका स्कोप नहीं होना चाहिए. You need to also focus on what design of the article, वो कैसे अरेंज किया है. Is that clear? ये आपको ध्यान में रखना है, and for that you need practice. Is that clear? Yes. आपको नई बैच में बैठना है, ठीक है. So you're quite late. 8 बजे शुरू हुआ है. ठीक. नेक्स्ट स्टेप है थॉट प्रोसेस. सो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग आइडियाज, वी आर क्लासिफाइंग देम एंड वी आर डिसाइडिंग व्हिच आर टू बी सिलेक्टेड फॉर एसे राइटिंग. इन सेकंड स्टेप वी आर थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज. इसको हम प्रेजेंट कैसे करने वाले हैं. तो पहला स्टेज आपका होगा आइडिया जनरेशन, क्लासिफाइंग द आइडियाज एंड सिलेक्टिंग ओनली इंपॉर्टेंट आइडियाज. सेकंड स्टेप में वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू प्रेजेंट द आइडियाज so that whatever you are going to say will be clear to the examiner और उसका पर्पस भी क्लियर हो जाएगा. तो इसका एक डायग्राम है वो आपको निकालना है, देन विल टॉक अबाउट इट. ये निकालो.
Done? Okay, let's talk about this. This structure of essay writing helps you to reveal your thought process to the exam, where it helps you to reveal your thought process in this second paragraph of introduction. In this paragraph, you are going to tell examiner how you are going to explain this. Why? There are several reasons. One, same topic, same information. बहुत बार ऐसा होता है in GS based topic. Out of 4 topics, many aspirants find only few topics familiar. So 4 topic दिए हैं GS के लिए. तो उसमें से 1 या 2 लोगों को बहुत familiar लगते हैं क्योंकि वो पढ़े हुए एरिया से आ रहे हैं. Okay, they are asked from the areas which you have studied already. So whether polity, society, economics, IR, जो भी आपने पढ़ा है as a part of your syllabus, उसमें से अगर कोई पूछा है टॉपिक, everybody thinks, okay, ये तो मुझे आ रहा है. Are you getting my point? And it has been observed even by us who checked mock test paper that out of say 15 aspirants, 13 tend to choose same topic. समझ में आ रहा है? So अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मानो मेरे पास 15 पेपर है चेकिंग के लिए और 13 लोगों ने एक ही टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा है, तो उन्होंने जो लिखा है उसका सोर्स सेम ही होगा ऑलमोस्ट. डू यू एग्री? आप सभी सेम किताब पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी सबका सेम है, रेफरेंस बुक सबका सेम है, न्यूज़पेपर सबका सेम है, मंथली मैगजीन सबका सेम है, गवर्नमेंट रिपोर्ट सबका सेम है, बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, इंडिया ईयर बुक, सब सेम पढ़ रहे हो, तो वहां से जो आ रहा है वो भी सेम है. सो स्टैटिस्टिक्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस, एग्जांपल्स वो सेम आ रहे हैं. देन एज एन एग्जामिनर हाउ एम आई गोइंग टू मेक डिफरेंस बिटवीन यू टू डिसाइड कि किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है. तो ये बताने के लिए दिस सेकंड पैराग्राफ हेल्प. इस सेकंड पैराग्राफ में आप एग्जामिनर को ऐसे बता रहे हैं कि देखो मैं ये टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, इवन बाय यूजिंग सेम इंफॉर्मेशन. समझ में आ रहा है? सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल, यू अंडरस्टैंड. सपोज टॉपिक ऐसा है, चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. ओके, चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. सो ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, इसमें मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा. कौन सा टॉपिक इसमें? हायर एजुकेशन. ठीक है. सो मैं उसके बारे में कुछ लाइंस लिखूंगा पहले पैराग्राफ में. सो आई विल से दैट इन इंडिया द पॉपुलेशन इज ह्यूज, इज इट नॉट? और उसमें यंग पॉपुलेशन ज्यादा है एंड ऑल ऑफ देम आर एस्पायरिंग फॉर गुड लाइफ, है ना? क्योंकि आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदला है ना? फ्री हैंड हैज बीन गिवन टू मार्केट. So people now have more opportunity to earn the wealth than they had earlier. पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा था, पहले पावरफुल लोग ही ज्यादा कमा लेते थे. Now even common man can start the business and become millionaire. ऐसे एग्जांपल है. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा किसको मिल रही है? Those who are well educated and that too from elite institute. सिर्फ well educated नहीं चाहिए. So सिर्फ MBA किया है इतना काफी नहीं. MBA कहाँ से किया है वो भी इम्पोर्टेंट. समझ में आ रहा है? सो डिस्टेंस एजुकेशन से MBA किया है तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन IIM से किया है तो अच्छा पैकेज, स्टेबल जॉब, करियर मिलेगा. सो देयर इज अ कंपटीशन अमंग यूथ टू गेट बेटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्रॉम एलिट इंस्टीट्यूट्स, बट द सप्लाई इज नॉट कमेंसुरेट विद द डिमांड. 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कुछ हजार लोगों को ही सीट्स जा रही है. सो देयर इज अ गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. सो ये मैं क्या कर रहा हूं? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स इन हायर एजुकेशन. अब ये जो सप्लाई डिमांड का गैप है, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, ये भी बताने वाला. सो यहां तक मैंने क्या किया है? आई हैव जस्ट टॉपिक को छेड़ा है मैंने कि प्रॉब्लम्स कहां से आ रहे हैं.
सो एक मैं बता रहा सप्लाई एंड डिमांड गैप की वजह से आ रहे हैं कि डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई कम है, ये भी एक वजह है। बट ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसमें मैं सिर्फ हायर एजुकेशन के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं उसके चैलेंजेस कहां से आ रहे हैं इसके बारे में बोलूंगा। सो आई माइट से कि जो भी आज चैलेंजेस है जिसकी वजह से ये सप्लाई डिमांड का गैप क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हमारी पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल। और कहा के पॉलिसी फ्रॉम ब्रिटिश इरा, ब्रिटिश जमाने से जो पॉलिसी हमने क्रिएट की है उसका इंपैक्ट हम आज भी देख रहे हैं। स्टिल इन सर्टेन एरियाज आवर एजुकेशन टेंड टू बी रूट लर्निंग। समझ में आ रहा है? असर प्रथम का सर्वे देखो आप, है ना, 7th-8th स्टैंडर्ड का बच्चा 2nd स्टैंडर्ड की किताब नहीं पढ़ पा रहा। सो ये पॉलिसी की वजह से ये हायर एजुकेशन के चैलेंजेस हो रहे हैं। सो अगर आपका बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ही ठीक नहीं है, हायर एजुकेशन में जाके क्या करोगे? सो आज भी हमारे यहाँ ऐसे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स है जिनको ढंग से अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, ऐसे है ना लोग, तो वो कैसे हायर एजुकेटेड हो गए? बेसिक लैंग्वेज स्किल नहीं है, हाउ कैन यू क्लेम टू बी हायर एजुकेटेड? सो मैं इस पैराग्राफ में बताने वाला हूँ द रूट कॉज ऑफ चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया आर पॉलिसीज एंड वी विल डू पॉलिसी एनालिसिस। इज दैट क्लियर? बट कोई बंदा बोल सकता है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा है पॉलिसी, कोई बंदा बोल सकता है कि मुझे लग रहा है कि कास्ट सिस्टम का इशू। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली एजुकेशन वाज अवेलेबल टू ओनली प्रिविलेज्ड कास्ट ग्रुप्स। ऐसा है ना, पहले एजुकेशन का जो राइट था वो सबको था क्या? नहीं, गिने चुने लोगों को ही था, वो ही पढ़ते थे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ही पढ़ती थी। And that has been reflected in the system. So if you go to higher education in elite institutes and if you do their caste analysis, most of the professors, chancellors, assistant professors are concentrated in only one community. और वो जो caste distribution है propagate हो रहा है, and that has itself created challenges for higher education. लेकिन कोई बंदा ऐसे बोल सकता है कि ये भी नहीं है। The real nature of higher education had changed in India after LPG reforms. क्योंकि LPG reforms के बाद private sector has been given free play and now it has entered into higher education. पहले कौन देता था? गवर्नमेंट ही देता था। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ गए हैं और उनके खुद के पॉलिसीज भी है, वो हायर पे चार्ज कर रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं, समझ में आ रहा है? उनका रिक्रूटमेंट अलग है। तो ये सब की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो पैराग्राफ है सेकंड वाला, ये एग्जामिनर को या रीडर को डायरेक्शन दे रहा है कि ये बंदा इस एसे के बारे में कैसे लिखने जाने वाला है। Are you getting my point? How you are going to explain the essay? And once you give the roadmap into this second paragraph, I become curious as a reader. कि ये जो आप बोल रहे हो ऐसे करने वाले हैं, ये कर रहा है कि नहीं? And then once you explain this in second essay, you move to main body, which constitutes roughly 5 to 8 या 10 paragraphs. इसमें क्या करना है आपको? Once you tell the examiner कि आप क्या करने वाले हो, उसके बारे में ही इधर लिखना है कंटेंट। If you have said that you do policy analysis, you have to say about policy. If you say that I will do analysis after LPG reforms, then you have to say the same thing in main body. अब इसके वजह से क्या होता है? You write introductory paragraph, then you stand out from the lot. Why? Because you are using same information, you are writing about the same topic, but you are saying things in different way, and that's why you are different than the others, and that gives me reason to give you marks more than the others. क्योंकि आप पहले ही मुझे क्लियर कर रहे हो कि आप कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, and that helps you in introductory paragraph. Extra introductory paragraph लिख के आपको ये करना है. Once you write the main body, then you have to move to the conclusion. In conclusion, you have to again write 2 paragraphs. उसमें second last paragraph है, that will be smart summary of what you have written so far. So it should give you crux or essence of what you have written. You have to revise and retell your key ideas again. Why? Because examiner may forget what you have written earlier. So you have to remind him or her कि ये हमने पहले डिस्कस किया था और ये important. So that is known as smart summary. And then you have to conclude the essay.
सो कंक्लूजन कैसे करना है ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन स्मार्ट समरी आपको देना है। अब ये करते वक्त आपको एक और भी चीज करनी है, यू हैव टू आल्सो टेल एग्जामिनर व्हाट इज लैकिंग इन योर एसे। इसके दो एडवांटेज है। वन, यू आर शोइंग ह्यूमिलिटी, you know that you are telling examiner whatever I have told you is not perfect, it is not complete. So ये कैसे करना है? मानो अगर आपने कास्ट सिस्टम का एनालिसिस किया है, towards the end you can say we can also analyze challenges of higher education from the policy perspective or from LPG reforms perspective. ये आपको बोलना है। ये आप बोल के क्या कर रहे हो कि मैंने जो कहा है कास्ट सिस्टम की वजह से हो रहा है वो परफेक्ट नहीं है, तो आप ह्यूमिलिटी बता रहे हो कि मैं हम्बल हूं, आई एक्नॉलेज व्हाटएवर आई हैव सेड हैज लिमिट्स। बट आप दूसरा भी साइड दे रहे हो कि देखो मुझे इसके बारे में मालूम है, बट यू हैव नॉट गिवन मी स्कोप एंड स्पेस टू राइट, दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग हियर, दैट्स ऑल। सो यू आर स्मार्टली शोइंग योर नॉलेज विदाउट सेइंग थिंग्स। सो इसको बोलते हैं सेइंग अनसेड थिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आप जाते जाते उसको ये भी बता रहे हो कि इस एंगल से भी हम इस टॉपिक को ट्रीट कर सकते हैं, बट आपने मुझे स्पेस नहीं। That's why I'm stopping myself. So वो क्या करता है? This style of writing leaves a memorable expression or impression on the mind of the reader. वो रीडिंग खत्म हो जाने के बाद भी सोचता रहता है कि इस आदमी ने अगर इसके एंगल से लिखा होता तो कैसे लिखा होता, and that is known as leaving memorable impression. That makes your reading of essay interesting. और वो आपको खुश होकर ज्यादा पढ़ता है। Are you getting my point? So towards the end, you should be able to highlight what is lacking in your essay in a humble way, in a smart way. तब एग्जामिनर को मालूम होता है कि you are also aware of other dimensions, but you are not able to tell them because of the space constraint. और वो सोचते भी रहता है कि अगर इसने ऐसा लिखा होता तो कैसे लिखा होता। So it is creating scope for sequel of the movie. आपने देखे क्या मूवी पार्ट्स में रहते हैं, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3, तो हर एक मूवी के एंड में सेकंड पार्ट का कनेक्शन देख के छोड़ देते हैं। So viewer become interested कि सेकंड में क्या होने वाला है ना? So बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? Are you getting my point? So ये स्कोप आपको क्रिएट करना है, that makes your essay interesting. और ये जब हो जाता है, you stand out from the lot. So even though you may write on the same topic that many people choose, still you have scope to score better marks. But let me tell you, even though I tell all these things, people fail to incorporate. क्यों आदत? So that is what learning and unlearning is important. ये कितना भी मैं ज्ञान आपको दे दूं, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, it is like teaching you how to swim theoretically, is it not? मैं आपको बताऊंगा ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, ऐसे डुबकी लगाओ, ऐसे तैर कर आओ, जब तक आप पानी में खुद नहीं उतरते और वो प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ये होने वाला नहीं। Is that clear? So you have to make it a deliberate practice. Are you getting my point? So this is in nutshell about thought process. Is that clear? और ये करने के लिए what you need is structure. ये थॉट प्रोसेस अगर लानी है तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर भी मालूम होने चाहिए कि आपके थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है। वो स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर एसे, ठीक है? विदाउट दैट योर थॉट प्रोसेस विल नॉट बी क्लियर टू द एग्जामिनर। इज दैट क्लियर? यस। ऑनलाइन पीपल, ये आपको समझ में आ रहा है? ऑलराइट, चलो आगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो थॉट प्रोसेस समझ में आ गया आपको? एनी डाउट अबाउट दिस? प्लीज आस्क। Now many people fail here also. Whenever we have opportunity to check your essay face to face, जब आप सामने बैठे और मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, बहुत बार एक दो स्पॉट ऐसे आ जाते हैं जहां मुझे क्लैरिटी नहीं होती कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो 3 वाला एक्सप्रेशन मेरे मुंह के ऊपर आ जाता है, कहना क्या चाहते हो। सो आई हाईलाइट दैट एरिया और मैं आपको ही पूछता हूँ कि भाई ये बताओ मुझे क्या है। तो आपके यहाँ जो आइडिया होता है ना वो सही होता है, करेक्ट होता है, आपको जो कहना है वो सही है, लेकिन वो आप कह नहीं पा रहे। And this is where language ability comes in. कि जो आपको मालूम है वो करेक्ट है, वो ज्ञान जो है आपके पास वो सही है,
लेकिन उसको आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा, तो उसके लिए वर्ड क्या चूज करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या लाना है, इंडिकेटर वर्ड्स क्या चूज करने हैं, ये आपको सोचना है, एंड दैट कम्स विद द प्रैक्टिस. So that's what I said. Whenever you are reading lead article in the Hindu, don't just read for content. Also read for a design and structure of this. उन्होंने जो भी लिखा है, बहुत बार ये कौन लिखता है मैं बताता हूँ, जो एकेडमिशियंस है, एकेडमिशियन यू नो, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, उन्होंने वो टेक्निक पहले से इम्बाइब किया है, तभी जाके वो एकेडमिशियन बने. और बहुत बार आपके जो पेपर चेक करने वाले लोग हैं वो प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटीज, इमिनेंट प्रोफेसर्स. ठीक है, तो वो भी वही देखते हैं आपके इसे में कि आपका राइटिंग स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, वो क्रिस्टल क्लियर आ रहा है कि नहीं. बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, इवन दो यू डोंट हैव एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड टू से, यू नो, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एनीथिंग इंप्रेसिव और एनीथिंग आहा मोमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप जो बोल रहे हैं वो सिंपल है, कॉमन सेंसिकल है, लेकिन आप स्ट्रक्चर्ड दे रहे हो, इसकी वजह से आपको ज्यादा मार्क्स मिले. क्योंकि इससे क्या होता है, इट मेक्स द टास्क ऑफ एग्जामिनर इजी. उसका काम आप आसान कर देते हो, आप उसको ट्रबल नहीं दे रहे, आप उसको सिर्फ पाथ बता रहे हो और वैसे आप जा रहे हो, यू आर गाइडिंग हिज रीडिंग, और वो खुश होकर आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देता है. सो इवन दो यू मे नॉट हैव यू नो excellent ideas to or argument to make, even though your arguments are simple, still your structured writing helps you to fetch better marks. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस. ठीक है, अब क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में 2 चीजें आप ध्यान में रखो which are important. फर्स्ट, पैराग्राफ कनेक्टर्स. अब इसमें बहुत बार क्या होता है, whenever you are writing distinct paragraphs, in each paragraph towards the beginning you should be able to tell the examiner कि आप इस पैराग्राफ में क्या करने वाले हो. So each paragraph stand apart as an independent entity, though connected to other paragraph. So पहले पैराग्राफ के towards the end ऐसा कुछ लिखना है which will give hint about second paragraph. लेकिन सेकंड पैराग्राफ के बिगिनिंग में ऐसा लिखना है which will make clear idea about whole paragraph. तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ कनेक्टर्स. इसको हम दूसरे लैंग्वेज में इंडिकेटर वर्ड्स भी बोल रहे हैं. इंडिकेटर वर्ड्स मींस these words when they come into sentence they alert you about certain functions. So for example, if I am using because, that is why, since, thus, therefore, these words indicate I am performing cause and effect analysis. है ना, कुछ तो इफेक्ट है, उसका मैं रीजन दे रहा हूं. Is that clear? If I am using words say but, however, nonetheless, despite, in spite of, on the other hand, on the contrary, unlike, तो ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, they are highlighting contradiction, contrast, कि ये मैं तो कह रहा हूं लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है, ऐसा मैं. और वर्ड्स लाइक यू नो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, ये क्या बोल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं. अभी मैंने आर्ग्यूमेंट की है बट उसको प्रूव करने के लिए आई एम नाउ गोइंग टू गिव एग्जाम्पल्स. या फिर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनली, ये क्या बता रहे हैं बताओ. अगर मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट दिस इज ट्रू, सेकंड दिस इज, थर्ड दिस इज, फोर्थ दिस इज, ये क्या कर रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं. फाइनली मींस फाइनल क्या हो रहा है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स. अगर ये वर्ड्स ना यूज करके मैं बता रहा हूं, विल यू बी क्लियर अबाउट दिस? नो. सो यूजिंग दिस वर्ड्स मेक्स रीडिंग इजी. ये मुझे बता रहे कि क्या चल रहा है. और अदर वर्ड्स है, देखो, सिमिलरली, जस्ट लाइक, लाइकवाइज, एज, जस्ट एज, ये वर्ड क्या कर रहे हैं, ऑल्सो, सो ऑल्सो, क्या बता रहे हैं, that I am drawing parallel or similarity between two things. मैं कंपैरिजन कर रहा हूं और उसमें सिमिलर क्या है ये बता रहा हूं. सो ये जो वर्ड्स है इनके खुद के कुछ फंक्शंस है. ये फंक्शन रीडर को बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, और उससे क्या हो जाता है, मेरे राइटिंग में क्लैरिटी आ जाती है, मेरा एक्सप्रेशन क्लियर हो जाता है.
and your reading gets guided. It is not open to interpretation. मेरा जो लिखा है मैंने वो open to interpretation नहीं है. I clearly tell you what I am doing. That's all. लेकिन ये इतना आसान नहीं. क्यों? बहुत बार हम in haste we forget to do this. Even we do this, we do it unintentionally. ये आपको intentionally करना है. क्यों? जब भी पहली बार आप ये word deliberately use करोगे, you will ask yourself कि ये word मैं क्यों use करूं? So आपका writing आपको clear हो जाएगा. So it is known as thinking about thinking. Whenever you are trying to use paragraph connectors, knowingly, deliberately, तब आपको खुद को ही मालूम हो जाता है कि आप इस पैराग्राफ में क्या करने वाले हो. आप कॉजेस देने वाले हो क्या, आप इफेक्ट्स बताने वाले हो क्या, आप सिमिलैरिटी दिखाने वाले हो क्या, आप पैराडॉक्स बताने वाले हो क्या, कॉन्ट्रडिक्शन बताने वाले हो क्या, आप एग्जांपल्स देने वाले हो क्या, आप लिस्ट देने वाले हो क्या, या खुद को ही मालूम होता है. एंड यू बिकम अवेयर ऑफ योर ओन राइटिंग एंड दैट मेक्स राइटिंग अ रियल राइटिंग. समझ में आ रहा है आपको? इंपल्सिवली कभी ऐसे नहीं लिखना है. इट बिकम्स अ बैड हैबिट. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गाइड योर राइटिंग एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर राइटिंग. सो उसके लिए पैराग्राफ कनेक्टर हेल्प्स यू. और उसका दूसरा एडवांटेज ऐसा है, इट आल्सो हेल्प्स योर रीडर. अगर आपने पैराग्राफ कनेक्टर यूज किए हैं तो रीडर को भी मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसका काम आप आसान कर देते हैं. एंड दैट शुड बी योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर राइटिंग. इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? So this is one way to bring clarity of thought and expression in your writing. Second way, write down personal response to important statistics main argument. Personal response to important statistics main argument. Now this is important. Why? Because I told you already, whatever you are going to write is also a reflection of who you are. आप पर्सनली कौन हो ये एग्जामिनर को आपके राइटिंग के थ्रू बता रहे हैं. तो उसमें आपके वैल्यूज, एटीट्यूड, कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए. सो मानो एक टॉपिक ऐसा है which is about women, and I think the statistics I am going to give is important to the topic or main point of the topic. So my statistic is that every hour, say 6 women are raped in India. Aisa statistics. As soon as you give the statistics, write one line about how you feel about this. So I may write, this is very depressing for me. In the 21st century, India, who is trying to bring superpower, this is a depressing scenario for me. So when I write this, I indirectly tell examiner what are my values, how I look at it, without telling him who I am personally. मैं उसको पर्सनल डिटेल्स तो नहीं बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैंने क्या सीखा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ. बट बाय राइटिंग दिस वन लाइन आई एम रिवीलिंग माय वैल्यूज. या फिर एक स्टैटिस्टिक ऐसा है कि जहां एक स्टेट में प्रीवियस ईयर सेक्स रेशियो x था, इस साल x प्लस हो गया है, बढ़ गया है. सेक्स रेशियो, यू नो, नंबर ऑफ गर्ल्स चाइल्ड टू बॉय चिल्ड्रन. सो ये बढ़ गया है. ये देख के मैं एक सेंटेंस लिखूंगा कि दिस इज एनकरेजिंग सिनेरियो फॉर मी. आई थिंक दिस इज वेरी एनकरेजिंग साइन फॉर इंडिया. सो इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी वैल्यू बता. सो ये जो वन लाइनर रिस्पॉन्स है, ये आपको कहाँ देना है? वेयर यू थिंक you are giving main argument or main statistics. ये हर एक पैराग्राफ में नहीं करना. समझ में आ रहा है? हर जगह नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बी ओनली अबाउट यू कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे कैसे फील हो रहा है. हर एक पैराग्राफ में आप वही बोल रहे हो. ऐसे नहीं करना है. एक दो जगह, दैट्स ऑल. और ये करते वक्त यू हैव टू डू इट इन अ सेंसिबल वे, नॉट इन एक्स्ट्रा इमोशनल वे. एक्स्ट्रा इमोशनल, यू नो, लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं लिखते लिखते, आंखों में पानी आ जाता है, रोने लग जाते हैं. वो आपके राइटिंग में नहीं दिखाई देना चाहिए. योर रिस्पॉन्स हैज टू बी अ मैच्योर, सेंसिबल, बट इट शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. ये आपको करना है और ये बहुत बार लोग भूल जाते हैं. दिस इज ट्रू.
ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सो ये दो चीजें आप ध्यान में रखो एंड वर्क ऑन योर लैंग्वेज एबिलिटी बिकॉज इट डजंट कम सडनली एंड इट नीड नॉट बी एट द लेवल ऑफ शेक्सपियर ऑल्सो, तो मेरा उतना भी लेवल नहीं चाहिए, है ना। फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, इनफॉर्मल नहीं। इवन इफ यू यूज idioms, use them sparingly wherever they are relevant. If you overuse them, it distracts the examiner. वो कंटेंट भूल जाता है, वो सिर्फ आपका लैंग्वेज देख के देखता रहता है, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। लैंग्वेज हैज टू बी अ मीडियम एंड नॉट गोल। लैंग्वेज इज व्हाट मीन्स एंड नॉट एंड, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरिजिनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। डू यू नो व्हाट इज ट्रिकी थिंग अबाउट दिस ओरिजिनलिटी ऑफ द कैंडिडेट? कि मैं आपको सिखा नहीं सकता, because the instant I tell you how to be original, it will never be original. It will be my thing, है ना। ओरिजिनलिटी आपके थिंकिंग से ही आनी चाहिए, लेकिन आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूं। यू कैन यूज योर लाइफ एक्सपीरियंस टू ब्रिंग ओरिजिनलिटी टू द टेबल। लाइफ एक्सपीरियंस मीन्स each one of you comes from different background. Do you agree? So some of you may have lived in villages, some of you may have lived in cities, some of you may have lived second tier cities, small cities. So हर एक एरिया का खुद का कल्चर होता है, वो आपका यूनिक एक्सपीरियंस है। आपका एजुकेशन भी अलग अलग है। Even though some of you may be engineers, but you have not done engineering from the same college or from the same branch. So आपका जो lived experience है वो अलग है। आपका रिलीजन भी अलग हो सकता है, सो रिलीजन से आपको जो मिल रहा है वो भी अलग है। आपका कास्ट भी अलग हो सकता है, सो कास्ट अलग होने की वजह से आपको जो एक्सपीरियंस आ रहा है सोसाइटी में वो सेम नहीं है। देन जेंडर वो भी अलग है। सो फॉर एग्जांपल बॉयज हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस देन गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम, चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस, ये भी आप ला सकते हो। सम ऑफ यू मे हैव वर्कड इन ऑर्गेनाइजेशंस, आपने काम भी किया होगा। कुछ लोग जॉब करके भी प्रिपेयर करते हैं या करने के बाद प्रिपेयर करते हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस एडेड है। सम पीपल मे हैव वर्कड विद एनजीओस, सम पीपल मे हैव टेकन पार्ट इन वॉलंटरी एक्टिविटी, चैरिटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, किया होगा काम। समटाइम्स यू मे हैव डिस्प्लेड लीडरशिप स्किल्स। आपके लाइफ में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके यू कैन ब्रिंग ओरिजिनलिटी। समझ में आ रहा है? But this doesn't happen in the exam. Why? Because we have not paid attention to. बहुत बार हम अपना खुद का एक्सपीरियंस को डिस्काउंट कर रहे हैं। हम ऐसा समझ रहे हैं कि इससे मुझे कुछ सीखना नहीं या सीख नहीं पा रहे, but that need not be true. अभी भी आपके पास वक्त है, right? I assume that most of you are above 20 roughly, है ना। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो below 20 है, बहुत सारे लोग above 20 है। So 20+ ईयर लाइफ में जो भी आपने दुनियादारी देखी है, दुनिया का जो भी एक्सपीरियंस लिया है, उससे कुछ तो सीखा होगा। Some learning, some experience that you can use in your essay writing to give solutions, to offer perspective. So I'll tell you how I do it, or how would I do it. When I was 10-year-old, I had traveled to a pilgrimage with my grandfather, and the journey was through truck. While coming back, it was a night journey, and I was insisting on sitting beside the driver. And I was very, obstinate child at that time. मेरा ऐसा ये था कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना ही चाहिए। But my grandfather was a reasonable man. He explained me well कि ये नाइट जर्नी है, तुम्हें क्यों बैठना है आगे? क्योंकि देखना है बाहर। बच्चों की वही तो डिमांड होती है ना, मुझे सब देखना है। But you won't be able to see anything outside because it is a night journey. आपको सिर्फ क्या दिखेगा? Light and road, that much only, and you will fall asleep, and there is a crowd in the front cabin, so you must sit beside me at the back side. तुम्हें अगर नींद आ जाएगी तो you can sleep near me. So I understood fairly well कि ये ठीक बोल रहे। So I went behind the truck and sat there, and the journey was going on. In the mid journey there was accident to the truck. वो एक ट्री के ऊपर चला गया because driver was not feeling well, and still people insisted on to him that he should drive throughout the journey. So उसकी वजह से क्या हो गया, ट्रक
एक झाड़ के ऊपर चला गया और जहां मैं बैठने वाला था वहां का एक आदमी ऊपर गया. The early morning when I saw his body, I realized I would have been that person. At the age of 10, I realized if you don't have knowledge, you must listen to those who have knowledge. ये तो सिंपल एक्सपीरियंस है, समझ में आ रहा है आपको, लेकिन ये आपको कुछ तो बता रहा है लाइफ में. और ऐसा भी मानो एक्सेप्शन होगा, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा अप एंड डाउन हुआ ही नहीं. ऐसा हो सकता है, some people have very plain, simple and straight line life, है ना, guarded by parents, everything, taken care of each and everything, कुछ भी देखा नहीं है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हंगर एक्सपीरियंस किया है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस किया है, क्राइम एक्सपीरियंस किया है. They have something unique to offer. So if you are not that person, at least you can learn from the others. आपके लाइफ में नहीं हुआ है, लेकिन आपके आजू बाजू के लोग जो है उनके लाइफ में कुछ तो हुआ होगा, उससे आप कुछ तो सीख सकते हो. So let me tell you another experience. It was year of 2006 or 5, and social media was very new. Even Facebook was not there at that time. At that time, there was another social media known as Orkut. Have you heard about this? Orkut था उस समय, and it was like Facebook, okay, where you have friend list and you make comment, post something, people comment on it, like it, and everything. तो उस वक्त I befriended a girl from IIT Kharagpur. We have never met, but we used to chat with each other and we became very good friends. We used to share experience. At that time, I was employed in a multinational company and she was doing her PG there. And we used to share experience. कि IIT में कैसे चल रहा है, company में कैसे चल रहा है, so on. And suddenly, after a few months, she disappeared from the social media. No contact, nothing. So I wondered what happened to her. Then also with the busy life schedule, I also forgot about her. Then suddenly, after 5 years, she contacted me. And she told me suddenly, I am in Pune, can you meet? Now, this was first time in my life that I had someone befriended on social media and she wants to meet me. I asked her what is special occasion. She told me, I will tell you when I meet. So, हम उस वक्त मेरी शादी भी हुई थी, तो उससे मैं मिलने चला गया, हम मिले. Then she told her life experience that she had befriended another guy and she got married with him on social media. पहचान हुई सब. वो इन्फोसिस में जॉब करता था, ये भी करती थी, मैरिज भी हो गया. एंड आफ्टर दैट शी रियलाइज ही इज अ फ्लर्ट, यू नो, he is also playing with other girls. By that time she was pregnant. Then she realized it is a disaster in her life. Then she immediately took the decision, she aborted, then she broke up with him, took divorce, and she became independent. Then she became government officer and started her own life. Now this incident told me that whatever given in social media is not everything authentic at the beginning of social media itself. समझ में आ रहा है आपको? So आपको क्या करना है, जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस आ रहे हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके आपको कुछ पर्सपेक्टिव देना है या सॉल्यूशन देना है, and that brings originality to the table. And in that sense, each one of us is unique. मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपका वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं. You can offer better solutions than me. You can offer better perspective than me. And that is why many times मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें मॉडल ऐसे दे दो या टॉपर के ऐसे दे दो. I ask them, don't do it, because you become rigid in your thinking. You may write better than that person. आपको सिर्फ essential element मालूम होने चाहिए and you start writing, that's all. Over a period you become better with the practice. ठीक है, लेकिन ये करते वक्त आपको दो चीजें अवॉइड करनी, वो मैं बताता हूँ. एक, डोंट बी टू नाइव. टू नाइव का मतलब क्या है, आपके राइटिंग से ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार इसको दुनिया कैसे काम करती है मालूम नहीं, कि अभी स्कूल से बाहर आया है. यू नो, किंडरगार्टन से बाहर जब लोग आते हैं ना, वो कैसे इनोसेंट रहते हैं. तो इतना इनोसेंट नहीं लिखना है. यू नीड टू नो हाउ वर्ल्ड वर्क्स. ठीक है, तो टू नाइव नहीं होना चाहिए. सो कुछ लोग ऐसे सोल्यूशन ऑफर करते हैं कि गरीब है तो पैसे बांट दो. नहीं ना, ऐसा काम नहीं करता ना. इकोनॉमी हाउ इट वर्क्स, व्हेन यू पुट मोर मनी इट गिव्स इन्फ्लेशन. सो सिस्टम कैसे काम करता है ये आपको मालूम होना चाहिए. एंड सेकंड, यू शुड नॉट बी टू एम्बिशियस. टू एम्बिशियस का मतलब है कि मेरे पास सब सोल्यूशन है, मुझे मालूम है कैसे करना है, आप सिर्फ मुझे पावर दो and see how can I make the difference. इतना भी एम्बिशियस नहीं है.
यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि आपके पहले ही बहुत लोग आके चले गए हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं. यू आर नॉट ओनली द वन सिविल सर्वेंट. You can make the positive difference, but you cannot be arrogant. You cannot be too ambitious. मुझे मालूम है सब. So you have to be humble, down to earth. You have to be sensible, receptive to the others. Then only your writing makes a mature writing. So whenever you are giving solution or giving perspective, ये दो चीजें avoid करो. Then you can bring your lived experience to the table and you can tell examiner something which is not told by others. That is known as originality. Is that clear? अब दिस इज फर्स्ट लेक्चर. थ्रू आउट ईयर आपको क्या करना है इन ऑर्डर टू राइट बेटर ऐसे, उसका पहला स्टेप क्या है मैं आपको बताऊं. आई गिव यू सर्टेन रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ ऐसे यूपीएससी से. You have to create a notebook for those topics and you have to divide the notebook into those topics and collect mere information about that topic, not opinions. Information में data, statistics, names, events, schemes, laws, policies, people, इनके नाम, events. डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए. प्रिस्क्रिप्टिव मींस टेकिंग स्टैंड, ओपिनियन, वो उसमें नहीं लिखना है. ठीक है. तो मैं आपको टॉपिक दे दूंगा. 8 टॉपिक आते हैं, रिपीट होते हैं वो, उनके बारे में ही आपको करंट इवेंट कलेक्ट करना है. ठीक है. सो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं. पहला है कोट बेस्ड और फिलोसॉफी. कोट बेस्ड और फिलोसॉफिकल. अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं. यू हैव टू कलेक्ट फिलोसॉफिकल टर्म्स, कंसेप्ट्स. ओके. जो फिलोसॉफिकल टर्म्स, कंसेप्ट्स आते हैं उनको कंपाइल करो, उनके डेफिनेशन लिख दो. उससे क्या हो जाएगा, यू विल हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि वो कंसेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है ऐसे नहीं होना चाहिए. कुछ तो पढ़ा है, कंसेप्ट मालूम है, ये शुरुआत होनी चाहिए. सेकंड, स्टार्ट कलेक्टिंग कोट्स. ओके. कोट्स ऑफ फिलोसोफर्स, कोट्स ऑफ थिंकर्स, मोटिवेशनल कोट्स, ये कलेक्ट करना शुरू करो. एंड व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग कोट्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम कि एटलीस्ट उसका डायरेक्शन मुझे मालूम हो रहा है. दैट शुड बी योर फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग लिख लो, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने टॉपिक रिप्रेजेंटेटिव दिए. जैसे टर्म्स आते हैं देखो, जॉय, ग्रैटिट्यूड, ये आपको मालूम होना चाहिए. कस्टमरी मोरालिटी किसको बोलते हैं, या रियलिटी क्या है, कंफर्म एंड कंफर्म में क्या डिफरेंस है, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है. ऐसे टर्म्स को आप इन्वेस्टिगेट करो और उसके बारे में लिख के रखो, सो दैट यू बी क्लियर व्हेन राइटिंग दिस. इसका अगर इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, देन इट विल बी डिजास्टर फॉर यू. सेकंड टॉपिक है पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये भी हर साल आता है. ओके. इसके बारे में भी आपको डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. इसमें टॉपिक कैसे आते हैं देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी. ठीक है. ऐसे टॉपिक आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये हर 3-4 साल आता है. इट इज नॉट आस्क्ड एवरी ईयर, एवरी 3 to 4 years. ओके. और ये सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं होता है. इट इज कनेक्टेड विद अदर वॉक्स ऑफ लाइफ. जैसे ये देखो, अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट इंडिया. सो ये किसके साथ कनेक्टेड है, क्लाइमेट चेंज, एंड दैट टू इन इंडिया, नॉट एवरीवेयर. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पैंसिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. So science and technology is connected with what? Growth and security. So next, women empowerment. ये अल्टरनेट ईयर आता है. अल्टरनेट ईयर मींस एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा. ओके. तो इसका फ्रीक्वेंसी भी आप लिख लो. वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक अल्टरनेट ईयर आता है. साइंस टेक हर 3-4 साल आता है. पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर साल आता है. फिलोसॉफी हर साल आता है.
इज दैट क्लियर? नीचे वाले टॉपिक मत लिखो, सिर्फ ये लिखो बोल्ड वाला, नीचे वाले मत लिखो। ये तो आपको लिस्ट दी जाएगी इन नोट्स। ओके, आपको सिर्फ सब्जेक्ट मालूम होनी चाहिए कि जिसके अंडर आपको कंपाइल करना है इंफॉर्मेशन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स। सो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी, ठीक है, ग्रेजुएट कितने वुमेन्स है, या फिर आईएएस में कितनी है, आईपीएस में कितनी है, ये स्टैटिस्टिक्स आपके पास होना चाहिए। साइंटिस्ट कितनी है, ठीक है, डाउरी डेथ कितनी होती है, रेप केसेस कितनी होती है, वुमेन अगेंस्ट क्राइम कितने रेट से बढ़ रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक ले लो, इकोनॉमी इंडियन डेवलपमेंट। ये भी ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर आ जाता है, ओके, एक साल आता है, एक साल नहीं आता। इकोनॉमी इंडियन डेवलपमेंट अल्टरनेट ईयर। सो पॉवर्टी थीम रहेगी, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ठीक है, या फिर फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। सो स्पेसिफिक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थीम है एजुकेशन। तो एजुकेशन का भी अल्टरनेट ईयर आता है, एक साल आता है, एक साल नहीं आता, ठीक है। इसमें टॉपिक देखो कैसे आते हैं। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, लेकिन इंडिया का मेंशन नहीं है, सो यू हैव टू आल्सो राइट अबाउट इंडिया बट नॉट एक्सक्लूसिवली अबाउट इंडिया। Education without values, as useful as it is, seems rather to make a man more clever devil. इसके बारे में ethics में भी आपको बहुत सारा मटेरियल है, because we discuss values in ethics, ठीक है, और इसके इम्पैक्ट भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन डेमोक्रेसी सोसाइटी कल्चर। इंडियन डेमोक्रेसी सोसाइटी कल्चर, ये हर साल आता है, दिस इज आस्क्ड एवरी ईयर। तो इसमें टॉपिक देख कैसे आते हैं। इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द यूथ, ये ऐसे टॉपिक आते हैं। एंड लास्ट इज आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हर 3-4 साल आता है और उसमें भी स्पेसिफिक रहता है, ठीक है। All right, so now onwards you have to make a notebook, preferably blank page, divide it into 8 parts and start collecting information about these subjects from current affairs. करंट अफेयर के लिए ओरिजिनल सोर्स ही रेफर करना है, कौन सा भी मैगजीन नहीं रेफर करना है, फैंसी बुक नहीं रेफर करना है, न्यूज़पेपर्स ही रेफर करना है। एक कंप्लीट पढ़ना है द हिंदू, दूसरा सप्लीमेंट्री इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र सिलेक्टिव यूज करो, पूरा यूज करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे ज्यादा इंफोसिस दे, सो उसमें बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर, ये आपको पढ़ना है। देन रिपोर्ट्स पब्लिश बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, जैसे फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हर साल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, एनुअल रिपोर्ट। वैसे हेल्थ मिनिस्ट्री भी रिपोर्ट पब्लिश करती है। देन चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी पब्लिश करती है, उनके रिपोर्ट्स आप पढ़ो, उनमें स्टैटिस्टिक्स होती है। देन एनसीआरबी का रिपोर्ट भी पढ़ना है आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उससे आपको क्राइम मालूम हो जाता है। जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट का बजट भी आपको पढ़ना है और उसका इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है, ठीक है। यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन देयर इज पीआईबी का वेबसाइट, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की वजह से क्या होगा, इट विल पुट यू न्यूज एवरी डे इन योर
इनबॉक्स, आपको डेली जो उनके अनाउंसमेंट है उसका लिस्ट आपको मेल पे भेज देते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें। सो PIB इज ऑथेंटिक गवर्नमेंट का वो ये है पोर्टल है, वहां से आपको न्यूज आ जाएंगे। ठीक है, इतना ही आपको करना है। मंथली मैगजीन को सप्लीमेंट्री यूज करो, नॉट एज मेन सोर्स। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको ही मेन सोर्स बना देते, बट नॉट एवरीथिंग इज कवर्ड बाय मैगजीन्स एंड दे टेक अवे योर स्कोप ऑफ एक्सप्लोरिंग द टॉपिक। वो आपको सब रेडीमेड दे रहे हैं, वो खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आपको रेडीमेड दे रहे हैं। वो आप कभी मत करो, बिकॉज देयर बुकलेट इज एज गुड एज 150 पेजेस, 100 to 150 पेजेस पर मंथ। वो सब पढ़ के कोई ध्यान में नहीं रखता है। बट इफ यू टेक एक्टिव इंटरेस्ट एंड डिग योरसेल्फ, यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। समझ में आ रहा है? बट इफ यू डू इट पैसिवली, डन बाय समवन एल्स एंड यू आर रीडिंग इट, इट विल नेवर हेल्प यू। ठीक है, वो जो आपने सुना होगा कि रीडिंग से कितना परसेंट मेमोरी होता है, राइटिंग से कितना परसेंट मेमोरी होता है, देन टास्क से कितना परसेंट होता है, टीचिंग से कितना परसेंट होता है, एंड इन्वॉल्वमेंट से कितना परसेंट होता है। तो आप खुद को इन्वॉल्व करो, ठीक है, एक्टिविटी में। इट विल क्रिएट अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, नॉट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, अभी पढ़ा है मालूम है, थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। वैसे करंट अफेयर नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर एंड्यूरिंग मेमोरी होना चाहिए। इट शुड बी योर नाउ ऑनवर्ड्स योर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब मालूम है, इट इज लाइक ऑक्सीजन। इफ यू डोंट टेक इट, यू वोंट सर्वाइव। Always keep in mind, the real power of bureaucrats lies in knowledge. Because without knowledge, you cannot have wisdom. So आपको आपका knowledge base अभी से build करना है। So ये जो basic elements आपके syllabus के हैं, polity, economics, geography, history, these are the building blocks. इनको आप पहले complete करो, ठीक है? Over a period, concept clear हो जाएंगे, and whatever you read in newspaper will have conceptual backing of your NCR. क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में जो पढ़ोगे, अगर उसका कंसेप्ट मालूम नहीं है आपको, करंट अकाउंट डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, मॉनेटरी डिफिसिट, आप उसका सेंस नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? देन योर राइटिंग विल बी सबस्टैंडर्ड। यू विल राइट समथिंग बट इट विल नॉट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, इट विल बी रोट लर्निंग। आप मेयरली रिप्रोड्यूस कर रहे हो, आप खुद के अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं लिख पा रहे हो। वैसे नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द एसे which you write towards the beginning are like that, जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन होता है, वो नहीं होना चाहिए। Is that clear? All right, guys, this is enough for today. Thanks a lot for your patient listening. If at all you have any queries, please do ask. Otherwise, we'll stop.